So let's start moment of inertia. Okay, so first of all, let's discuss the definition of moment of inertia. So let's lost many time. The definition of moment of inertia is asked in the examination. So moment of inertia is nothing but second moment of area about any axis is known as moment of inertia. Okay, second moment of an area about any axis, that is known as the moment of inertia. This is the first definition. I think that is one more definition that just made. I am discussing here one more definition for moment of inertia. Second definition of moment of inertia is just like that. It is defined as, second definition is, it is defined as, the sum of integral of the sum of integral of product of the elemental areas and square of their square of the distances from the reference axis. Just a minute. From the is it clear? Please confirm, my students. Okay, don't worry. I am explaining this definition to all of you. Don't worry. Okay, the statement is clear or not? Please confirm. This to our definition of moment of inertia. Okay, so now I think second statement is little bit difficult to understand, but let me discuss the moment of inertia by equation. Suppose this is your x-axis, this is your y-axis, and this is your z-axis, and your element is lies in xy plane. Okay, so as we have discussed in center of gravity, let me assume that this is the center of gravity of this particular lamina. So this is the centroidal x distance, x bar. This is the centroidal y distance, y bar. Is it okay? Is it clear now? And area of this lamina is A. So now we are interested to here calculate. Ixx and Iyy. Ixx and Iyy. So as per definition of the moment of inertia, second moment of an area about any axis is known as the moment of inertia. So now please tell me, to take a moment, which kind of distance is required? Tell me, chale, fast. To take a moment, which kind of distance is required? Which kind of distance is required? Students, please. To calculate moment, which kind of distance is required? चलिए मैं आपको हिंट भी दे देता हूं, पैरेलल या परपेंडिकुलर. टेल मी, to calculate moment, which kind of distance is required? Rethink, your answer is wrong. Your answer is wrong. To calculate moment, which kind of distance is required?
Parallel या perpendicular? Okay, so no one giving me answer. Let me give answer. That is a perpendicular. Okay, so now we are interested to take a area of moment of area. So we are here interested to take a moment of an area. So to calculate I-axis, we will require perpendicular to x, that is y. So second moment of an area. So A into y bar into y bar. Why 2 times? Because we are interested to take a second moment. That's why we are taking a 2 times moment. So A into y bar square. Similarly, here A into x bar into x bar. That is equals to A into x bar square. Now, before let me clear it up to some more extent. We have discussed. Suppose I am writing like this: A into y bar. Just correlate with the equation of y bar. Summation ai yi by summation ai. Yes or no? ऐसा कुछ डिस्कस किया था हमने? ऐसा कुछ डिस्कस किया था? Yes or no? Please confirm me. Yes or no? So now, what is this? What is this? This is nothing. This is nothing but first moment of an area. Yes or no? So to get a center of gravity, we will require first moment of area, and to get a moment of inertia, we will require second moment of area. Is it clear? Is it clear? So this is a simple definition of moment of inertia. Now, one more important theorem, that is a parallel axis theorem, and it will be used for lots many examples. Now, I am not discussing here derivation of parallel axis theorem. I am discussing here only concept of parallel axis theorem. If time permits, I will definitely go. Okay, I am writing here equation. The moment of inertia, the moment of inertia of a lamina about a given reference axis. About a given reference axis. About a given reference axis is equals to, let me first of all write a statement, then I will explain this statement. Don't worry. It is equals to the sum of moment of inertia, the sum of moment of inertia about its centroid axis and product of area of the lamina and square of the distance between the centroidal axis and reference axis. Is it clear? So this is a statement for parallel axis theorem. I know no one able to understand ये statement में क्या बोल रहा है. ठीक है, don't worry, I am explain this statement. Don't worry. So now, for an example, this is your lamina. Okay. Now, can I say that this lamina having an n number of particles? Okay. Can I say that this lamina having an n number of particles? Say for all n number of particles having a common center of gravity about this point. And center of gravity axis passing from this point, that is nothing but centroidal axis of this lamina. Is it okay? This center of gravity
I am here representing x-axis because it is a direction in x-axis. Now, we are interested to calculate a moment of inertia of this lamina about this solid line. Say that axis is the AA axis. Okay, that axis is the AA axis. Now, distance between this dotted line is nothing but CG axis of your lamina. Okay, and say area of this lamina is A, and this distance is H. Now, right now I am writing HY. Why I am writing down HY? Because this distance is a H, but direction is a Y. That's the reason I am writing here HY. Is it okay? Let's confirm me. Is it okay? मैंने क्यों HY लिखा पता है? इसमें कुछ डाउट है? Is it okay or not? Please confirm in chat box. Why I am here writing HY? Is it clear or not? I hope it is clear to all of you. Chaliye, fine. Now, we are discussing now this theorem, the moment of inertia of a lamina about reference axis. Now, what is your reference axis? AA. So, symbolic representation of moment of inertia is I. We are interested to calculate moment of inertia about A axis. That's why I am writing down IAA. That is equals to sum of moment of inertia about its centroidal axis. That means आपको ये लैमिना की सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कंसीडर करना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे I सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इसलिए ICG, x डायरेक्शन है इसलिए ICG XX प्लस बिकॉज सम करना है and product of area of lamina, that is A, and square of the distance between centroidal axis and reference axis. What is the distance between centroidal axis and this is your reference axis? RA is nothing but your reference axis. That is nothing but HY square. I hope now this theorem is clear to all of you. Is it okay? Please confirm me. Is it okay? ये पूरा चैप्टर ये थियरम पे डिपेंडेंट है. ये थियरम पता चल गया तो पूरा चैप्टर खत्म. Please confirm me, is it clear or not? Statement and equation correlate हो रहा है. Same application हमको example में करना है. चलिए, fine. Now let me make it simple. In general form. Now tell me, given reference axis in which direction? कौन से डायरेक्शन में है? आपका रेफरेंस एक्सिस कौन से डायरेक्शन में है? Tell me. आपका रेफरेंस एक्सिस कौन से डायरेक्शन में है? Tell me. रेफरेंस एक्सिस कौन से डायरेक्शन में? चलिए बताइए मेरे को. थोड़ा जल्दी कीजिए और मेरे को आंसर दीजिए फास्ट चैट बॉक्स में. एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन? चलिए मैंने हिंट भी दे दिया. रेफरेंस एक्सिस कौन से डायरेक्शन में? एक्स या वाई? एक्स. सो कैन आई राइट लाइक हियर आई एक्स एक्स दैट इज इक्वल्स टू आई CG XX plus A HY square. Is it okay? Is it okay? It is in general equation. It is in general equation to calculate moment of inertia about any reference axis. Now let me discuss same thing for Y axis. Okay, I am changing the color. So now suppose this is your center of gravity Y axis. This is your center of gravity Y axis, your lamina, and this axis say BB. Okay, that is nothing but your reference axis now. So and this distance actually in a x direction, but we are representing y hx. Is it okay? Is it okay? So can I write like that? I double B or IBB, that is equals to center of gravity moment of inertia in YY direction plus A HX square, and this axis actually in a Y direction. That's the reason IYY that is equals to ICGYY plus AHX square. Is it okay or not? Please confirm me, students, fast. These two equation is clear or not? Chali. Now, in a calculation, what is HX? That is nothing but simple x bar minus xi.
ये आपको याद रखना है. In a calculation, what is hy? Y bar minus yi. Now, whatever value of x bar, whatever value of xi doesn't matter, plus है minus है, x bar ज्यादा है, xi ज्यादा है, xi ज्यादा है, x bar कम है, doesn't matter, because ultimately हम square कर रहे हैं. Yes or no? Ultimately हम square कर रहे हैं, तो आपका आंसर by default positive आने वाला है. Is it okay or not? Please confirm me first. Okay, so what is x bar and y bar? That is a center of gravity of system, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रखा है प्रीवियस एग्जांपल्स में. एंड व्हाट इज योर xi yi? दैट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ पर्टिकुलर पार्ट और एरिया, पर्टिकुलर एरिया. ओके, कैसे कोरिलेट करते हैं मैं एग्जांपल में समझाऊंगा. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म. इतना क्लियर है? And one more announcement to all of you. Before coming in next lecture, it is compulsory to all of you see all the lecture of center of gravity. Whatever example I have covered, T section, one example of the rectangle, semicircle and triangle, calculate in knot, in your knot. Okay, डेटा आपके पास रखना है. मैं सेम एग्जांपल यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए कैलकुलेट करूंगा. So please give me all the value whatever we have calculated. Yes or no? Everybody with me? ये आपको कैलकुलेट करके आना है. ठीक है, we are going to calculate directly moment of inertia part, not we are discussing any center of gravity part. So please come with calculation of the center of gravity वाला part. ठीक है ना? Okay, I have already said all the recordings to all of you. Go through recording and try to make notes. चलिए, now let me discuss some of the equations. Okay, so we can calculate examples of moment of inertia in a next week. Okay, or next lecture. Sorry, not in next week, but in next lecture. So let me discuss first of all moment of inertia equations for rectangular section. If you wish to note down, please note down it, because again come with this equation in next lecture, because it is required in next lecture. Say this is your rectangle section. Width of rectangle section is B. Depth of rectangle section is D. Now, all of you are knowing that this is the center of gravity of your rectangle section. Okay, and axis passing from this axis is nothing but, this point is nothing but your center of gravity, x and y axis. Yes or no? This is centroidal x, this is centroidal y. Everybody with me? So ICG xx, that is equals to BD cube divided by 12. ICG YY, that is equals to DB cube divided by 12. Is it okay or not? Please confirm me, students. Similarly, we have one more axis like this. Just a minute. Yes, this axis. ये वाला एक्सिस और ये वाला एक्सिस जो मैंने ग्रीन कलर से मार्क किया है, मैं उसको BXX रिप्रेजेंट करता हूं और BYY रिप्रेजेंट करता हूं. सो नाउ ये वाला जो एक्सिस है, ये आपका बेस का एक्सिस है, आपका बॉडी का बेस है. यस और नो? सो for about this axis, your moment of inertia I base xx, that is equals to BD cube by 3. I base YY, that is equals to DB cube by 3. ये equations clear है? Please confirm me in chat box. Now, how to remember this equation? How to remember this equation? Just concentrate in ICG xx and ICG YY. If we are going to calculate ICG xx, we are taking a cube of opposite direction. Y वाले direction का cube कर रहा है. If you are going to consider ICG YY, we are taking a cube of x वाला direction. Yes or no? In both case,
if either about base or about center of gravity, cube will be a opposite direction. Is it clear? I hope it is clear to all of you. Clear है? Please confirm in chat box. ये इक्वेशंस को यूज कैसे करना है मैं एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा, लेकिन इक्वेशन कौन सी जगह पे वो क्लियर हो चुका है आपको. फर्स्ट टू इक्वेशन है एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस. सॉरी, सेकंड इक्वेशन है एट बेस एक्सिस. Is it clear or not? Please confirm, students. Can we move ahead? Can we move ahead? Please confirm me. Next step पे डिस्कस करें. चलिए, डोंट वरी, दिस ये पीडीएफ में आपको शेयर कर दूंगा. नेक्स्ट इक्वेशन दैट इज अ सर्कल. ओके, let me draw a circle. Yeah, next step is the circle. Now just tell me, for every case your circle is symmetrical, yes or no? Symmetrically आएगा, सेंटर उसका सेंटर में रहने वाला है. So this is your reference, this is your centroidal x axis, this is your centroidal y axis. Now tell me, is there any base in circle? सर्कल में कोई बेस आएगा? Tell me, सर्कल में कोई बेस आएगा? बेस है? नहीं है. ओके, सो इन केस ऑफ सर्कल वी आर एबल टू कैलकुलेट ओनली center of gravity moment of inertia, that is nothing but pi by 64 d raised to 4, and ICG yy that is nothing but pi by 64 d raised to 4. दोनों का इक्वेशन सेम रहेगा. इज इट क्लियर और नॉट? प्लीज कंफर्म स्टूडेंट्स. ओके, ये पूरा आपका डायमीटर रहेगा, डायमीटर रेडियस आपको पता है. नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट इज द सेमी सर्कल. Okay, circle is not important, but semicircle is very important. So this semicircle, now tell me, this semicircle is symmetrical about which axis? Tell me, चलिए मेरे को ये बताइए, semicircle कौन से एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है? Yes, good. I want more answers. Yes, you are right. ये semicircle कौन से एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है? चलिए बताइए मेरे को. X या Y? Tell me. ये सर्कल है, मैं यहां से इसको कट कर रहा हूं. ये जो शेडेड एरिया है वो मैंने कट किया है. ठीक है, तो हमारे पास इतना एरिया अवेलेबल है. नाउ जस्ट थिंक लाइक सिमेट्री. If I am folding this point to this point, or if I am folding this point to this point, now tell me about which axis it is symmetrical. और मिरर कौन से एक्सिस के लिए है? ये दो पॉइंट को मैं मिरर कर रहा हूं, तो एग्जैक्ट मिरर इमेज किसके लिए आ रहा है? एक्स के लिए या वाई के लिए? कौन से डायरेक्शन के लिए आपको सिमेट्रिकल या मिरर दिखेगा? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. वाई एक्सिस के लिए ये सिमेट्रिकल है, यानी कि ये सेमी सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल बी एट एनीवेयर ऑन वाई एक्सिस. यहाँ पे होगा, ऐसा बोल सकते हैं. यस और नो? यस और नो? मे आई राइट? ऐसा कुछ हो जाएगा. यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी पॉइंट रहेगा. यस और नो? और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी में से जो भी एक्सिस पास होगा वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई होगा. यानी कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स विल बी रिप्लेस्ड. इट इज नाउ नॉट मोर, नाउ इट इज नॉट एज ऑफ द सर्कल. सर्कल का ये वाला सेंटर ऑफ ग्रेविटी था, अभी आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हो चुका है. नीचे मैंने ड्रॉ किया, देखिए डॉटेड लाइन से. एंड योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन विल रिमेन सेम. यस और नो? वो चेंज हुआ है? बताइए मेरे को. सेंटर ऑफ ग्रेविटी इन वाई डायरेक्शन चेंज हुआ है? टेल मी. उसका लोकेशन चेंज हुआ है? टेल मी. यस और नो? स्टूडेंट्स प्लीज थोड़ा रिस्पॉन्स दीजिए, वरना मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख दूंगा. मेरे को कोई मैं बाद में यहाँ पे सिर्फ इक्वेशन लिख के जाने दूंगा, आप रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो. टेल मी, आपका सेंट्रोइड वाई एक्सिस चेंज हो रहा है? टेल मी.
नहीं नहीं हो रहा है, ठीक है। सो नाउ जस्ट थिंक दिस इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स, दिस इज योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई, ठीक है। चलिए हमारे पास यहाँ पे तीन पॉसिबिलिटी है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी आई सी जी एक्स एक्स, ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई वाई एक्सिस है। सेकंड पॉसिबिलिटी इज आई सी जी वाई वाई। थर्ड पॉसिबिलिटी इज आई बेस एक्स एक्स। मे आई राइट, आपके पास एक बेस अवेलेबल है, यस और नो। ये बेस आपके पास अवेलेबल है, यस और नो, बेस एक्स एक्स। आपके पास तीन पॉसिबिलिटी। नाउ टेल मी, हमने सर्कल में से हाफ पोर्शन कंसीडर किया है, आपका आपका सेंट्रोइड वाई एक्सिस सेम लोकेशन पे है, यानी कि उसका प्रॉपर्टी सर्कल के जितना ही होगा लेकिन हाफ हो जाएगा, यस और नो। 1/2 पाई बाय 64 d raised to 4, that is nothing but pi by 128 d raised to 4, yes or no, please confirm me, is it clear? just visualize that, just visualize, उसका प्रॉपर्टी सर्कल जितना ही होगा लेकिन हाफ हो जाएगा। सिमिलरली बेस एक्सिस कंसीडर कीजिए, ये बेस एक्सिस जो सेमी सर्कल का है वो सर्कल का सेंट्रोइडल एक्सिस है, यस और नो। जो बेस एक्सिस है वो सर्कल का सेंट्रोइडल एक्सिस है, यस और नो। तो उसका प्रॉपर्टी भी हाफ हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट 1/2 पाई बाय 4 64 d raised to 4। सर्कल का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्सिस का है उसका हाफ हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट पाई बाय 128 d raised to 4। आपको आईसीजी एक्स याद रखना है, 0.11 r raised to 4। इज इट क्लियर? ये इक्वेशन में कोई प्रॉब्लम है? ये इक्वेशंस में कोई प्रॉब्लम है? टेल मी, चलिए बताइए मैडम, इतना क्लियर है? ओके नाउ बट व्हाट अबाउट दिस, ऐसा दिया है तो क्या करेंगे? ओके चलिए मैं दूसरे स्लाइड पे लिखता हूँ, कंफ्यूजन ना क्रिएट हो। सपोज ऐसा दिया है, नाउ टेल मी दिस सेमी सर्कल इज सिमेट्रिकल अबाउट व्हिच एक्सिस। ये सेमी सर्कल कौन से एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है? टेल मी। एक्स के लिए, यानी कि ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स होगा, ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई होगा, ठीक है। यानी कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट पे रह सकता है, ठीक है ना। तो अगेन वी हैव थ्री पॉसिबिलिटी, आई एक्स एक्स, सॉरी आई सी जी एक्स एक्स, आई सी जी वाई वाई, आई बेस वाई वाई। ये आपका एक्स एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई वाई एक्सिस है, और ये आपका बेस वाई वाई एक्सिस है। सो अगेन योर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्सिस डज नॉट चेंज, सो उसका प्रॉपर्टी हाफ हो जाएगा, 1/2 into pi by 64 d raised to 4, that is nothing but pi by 128 d raised to 4। बी वाई वाई जो है उसका लोकेशन भी सेम है लेकिन हाफ हो जाएगा, 1/2 pi by 64 d raised to 4, you will get pi by 128 d raised to 4, लेकिन आपका ICGY हो जाएगा 0.11 r raised to 4। इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म मी, इज इट क्लियर? नाउ याद क्या रखना है, चलिए यहाँ पे देखिए, ये आपका सेमी सर्कल सिमेट्रिकल अबाउट वाई है, सिमेट्रिक अबाउट वाई। इतना याद रखना है, जो एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है उसका ऑपोजिट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका 0.11 r raised to 4 होगा। जिस एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है उसका ऑपोजिट का सेंटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया 0.11 r raised to 4 होगा। यहाँ पे देखिए ये सिमेट्रिकल अबाउट सिमेट्रिक अबाउट एक्स एक्स, जिस तो उसका ऑपोजिट यानी कि वाई वाई वो आपका 0.11 r raised to 4 होगा। दूसरे दो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपका पाई बाय 120 d raised to 4 होगा। इज इट क्लियर? प्लीज कंफर्म मी, प्लीज गिव मी क्विक रिप्लाई, इज इट क्लियर और नॉट? क्लियर है? चलिए एक केस याद रखोगे तो दूसरा केस ऑटोमेटिक याद आ जाएगा, ठीक है। चलो लास्ट केस हम डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस इज आल्सो इंपॉर्टेंट, ट्राइंगल सेक्शन। ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है, ओके। सो ट्राइंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज यहाँ पे है, तो ये जो एक्सिस है और ये एक्सिस है,
ये आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक्स एक्स एक्सिस और सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाई वाई एक्सिस है। तो आपका सपोज ये आपका विड्थ है बी, सपोज आपका डेप्थ है डी, so your center of gravity, sorry, moment of inertia ICGXX, that is nothing but BH cube by 36. Moment of inertia ICGYY, that is nothing but HB cube by 36. Moment of inertia base XX, that is nothing but BH cube by 12. Moment of inertia base YY, that is nothing but HB cube by 12. ठीक है, ये आपको याद रखना है। नाउ जस्ट सिंप्लीफाई अगेन, आई एम वी आर गोइंग टू कैलकुलेट इन एक्स डायरेक्शन, क्यूब वाई का है, देखिए सभी जगह पे रिफ्लेक्ट हो रहा है। और आपका जो बेस वाला है ये आपका सीजी का है, सीजी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये आपका बेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। बेस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसको कंपेयर कीजिए रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल क्या, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का इक्वेशन, देखिए और कोई चेंज नहीं है। रेक्टेंगल में मैंने डी लिया, यहाँ पे मैंने एच लिया, देखिए बीडी क्यूब बाय 12 डीबी क्यूब बाय 12, और सेम वैल्यू आपका ट्राइंगल में। इज इट क्लियर और नॉट, प्लीज कंफर्म। क्लियर है ये क्लियर है आपको? क्लियर है ना? ओके चलिए, सपोज ऐसा ट्राइंगल दिया हुआ है। नाउ दिस ट्राइंगल इज सिमेट्रिकल, यस और नो? ये ट्राइंगल आपका सिमेट्रिकल वन है, यस और नो? ये ट्राइंगल आपका सिमेट्रिकल वन है। तो इस केस में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी सपोज यहाँ पे, ये आपका एक्स एक्सिस हुआ, ये आपका वाई एक्सिस हुआ। सो ICGXX, ICGYY, इफ आई एम नॉट रॉन्ग दिस इक्वेशन, एक बार आप बुक में चेक कर लेना, ओके। BH क्यूब बाय 36 है, और ये वाला इक्वेशन आपका HB क्यूब बाय 48 है, ओके। नाउ इन दिस केस वी हैव ओनली वन बेस, यस और नो? एक ही बेस है हमारे पास, BXX। So I base XX, that is nothing but BH cube by 12. Now ये तो हुआ x, ये नाउ ये ट्राइंगल कौन से एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है, टेल मी। ये ट्राइंगल कौन से एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है, टेल मी। सिमेट्रिकल कौन है? यस, y के लिए, ठीक है, y के लिए है। तो सपोज ऐसा x के लिए दिया हुआ है, तो उसमें क्या करना है, इक्वेशंस याद रखने की जरूरत नहीं है। नाउ if your triangle is symmetrical about y axis, जिस एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है उसके डिनोमिनेटर में 48 आएगा। just give me a minute, I am verify the equation if I am not wrong. Yeah, it's right. जो भी एक्सिस के लिए सिमेट्रिकल है उसके डिनोमीटर में 48 आएगा, उसके ऑपोजिट के डिनोमीटर में 36 आएगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बात कर रहा हूँ, दिस इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। और बेस का फिक्स है, डिनोमीटर में 12 वाला आएगा बेस। क्लियर? यहाँ पे बेस कौन सी डायरेक्शन में आएगा, एक्स या वाई? बताइए मेरे को, यहाँ पे बेस कौन सी डायरेक्शन में आएगा, एक्स या वाई? वाई, ठीक है। और इस केस में 48 एक्स के लिए आएगा, यानी कि BH क्यूब बाय 48 एंड HB क्यूब बाय 36। इज इट ओके ना? क्लियर है? क्लियर है? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? चलिए, तो सब इक्वेशन हमने डिस्कस कर लिया है। तो आज इतना रखते हैं, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल टू कंप्लीट नेक्स्ट एग्जाम्पल, बिकॉज हमको अभी एग्जाम्पल वाला पोर्शन स्टार्ट करना है, ठीक है। So if you want to take a snapshot, please take a snapshot of all the slides. This is your first slide, and make sure all of you are come in next lecture with with previous lecture examples and with equations. ना ये equations चाहिए आपके साथ, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट equations लिख दूंगा। आपको ये equation आप अपने पास रखने हैं। Okay, just a minute, I am taking your attendance.
एंड वन मोर एज अनाउंसमेंट, आपका ऑनलाइन लेक्चर कितने बजे खत्म होता है बताइए मेरे को, आप लोगों का ऑनलाइन लेक्चर कितने बजे खत्म होता है? ओके 2 बजे। सो इन नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रोबेबली ऑन ट्यूसडे, मंगलवार को आपका एक्स्ट्रा लेक्चर रहेगा 3:10 को। इज इट ओके? 3:10 पे। ओके ठीक है, उसमें क्या हम डिस्कस करेंगे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। ये जो हमने इक्वेशंस यहाँ पे लिखे हैं, मैंने डायरेक्ट वैल्यूज लिख दिया है, उसका डेरिवेशन इट इज नॉट पॉसिबल टू कवर ऑल द डेरिवेशन। ओके, ये पॉसिबल नहीं है, तो मैं आपको हिंट दे दूंगा कि ये डेरिवेशन कैसे करते हैं। 1 या 2 का डेरिवेशन मैं पूरा करवाऊंगा, उसके हिसाब से आपको दूसरा डेरिवेशन करना। ठीक है, इज इट ओके? ठीक है, so on next Tuesday we are going to take extra lecture at 3:10, okay, 3:10 p.m. okay, so that's it for today. We'll meet again in next lecture.